Now, let's begin our third lecture. जहाँ तक हमने पहले देखा था, हमने पढ़ा था about conduction current. Now we will study after the conduction current कि आगे क्या क्या इसमें डायग्राम्स होते हैं, आगे क्या क्या होता है, about the more detailed study about the displacement current. Now, जो हमारी इक्वेशन आई थी लास्ट टाइम, द इक्वेशन हमने पढ़ी थी एप्सिलॉन नॉट डी phi E upon dt is equal to I current. This is the equation we had studied in the last lecture. The current is a new term here. The current. This is a new term. We write time here. This is a new term. It's a new term. Current here. And is due to the changing in electric field. It's due to the change in electric field. It is therefore called displacement current or Maxwell displacement current, or it is therefore called Maxwell current or displacement current. These are the two. The new term here is current I due to the change in electric field. So this is called the displacement current or magnetic field. Now we'll see a diagram. We'll see a figure. It is like that. हमने दो पैरेलल कैपेसिटर, एक पैरेलल लिए, यहां से हमने एक मैग्नेटिक फील्ड दी बी. ओके, इसकी हमने कुछ डायरेक्शन गए और there are some charges, there are some positive charges. यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड M, दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड M. ये हमारा पॉइंट सोर्स P जो आउटसाइड है मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा B मैग्नेटिक फील्ड. ओके, this is our magnetic field. Now, what we study about this diagram, that the generalization made by the Maxwell, the generalization made by the Maxwell then it in the following is the following. The source of magnetic field is not just the conduction. The source of magnetic field is not the conduction. Electric field due to the flowing of the current. Electric field due to the flowing of the current. जो जनरलाइजेशन मेड किया था बाय मैक्सवेल,
इसके हिसाब से हमने पता लगाया कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट चार्जेस, but also the rate of change of electric field, more precisely जो हमारा टोटल करंट होता है और करंट सम I, जो टोटल करंट जिसका सम हमारा I है, we can write it down, the total current I is the sum of the conduction current denoted by IC, is the sum of total conduction current which is denoted by I small c, and the displacement current denoted by ID, and displacement current denoted by ID. Okay, now we know that ID, that is equal to epsilon naught d phi by E by dt. हमें पता है ये फॉर्मूला होता है, so we can write I is equal to IE plus ID, so we can write I is equal to IC plus epsilon naught, ID को अपन क्या लिख सकते हैं, epsilon naught d phi E by dt. हमें पता है ये हम लिख सकते हैं, हमने पहले भी डिराइव किया था, पहले भी लिखा था फॉर्मूला. In explicit terms, now in explicit terms, this means that outside that means outside the capacitor plate, we have only conduction current IC. We have only conduction current. That is IC, which is equal to current I, and no displacement current, and there is no displacement current. तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ID की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. So इससे क्या हुआ, on the other hand what we generalize that कैपेसिटर के इनसाइड कंडक्शन करंट नहीं होता और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट होता. हमें इससे क्या मिला, there is no conduction current in the capacitor. हम क्या लिख सकते हैं, IC is equal to 0 and there is no displacement current. So there is no displacement current. Now, so the generalized and the correct way, हम कह सकते हैं तो generalized और correct एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ का क्या होगा, the generalized एम्पेयर circuital law has the same form as equation 8.1, has same form of equation जो हमने पहले लिखी थी, ठीक है, and with one difference, और सिर्फ इसमें एक difference है, one difference is that we can write the total current passing through any surface of which the closed loop is the parameter. The total current passing through
any surface of which the closed loop is the parameter. Is the parameter. Okay. So is the sum of the conduction current and the displacement current, or it is the sum of the conduction current and displacement current. It is the sum of both the conduction current and the displacement current. Okay. So we can write down for the closed loop B dot dl is equal to mu naught I naught IC plus mu naught epsilon naught, उसको हमने क्या लिखा था यहाँ पे डी फाई बाई डी टी. ये क्या हमारी वैल्यू आई डी, इसकी वैल्यू हमने पहले भी लिखी. तो इसे क्या कहते हैं, इट्स नोन एज एम्पियर मैक्सवेल लॉ. इट्स कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल लॉ. ओके. नाउ द डिस्प्लेसमेंट करंट की क्या फिजिकल इफेक्ट वही होते हैं एज द कंडक्शन करंट, मतलब दो हैव सेम फिजिकल इफेक्ट. वी कैन राइट इट डाउन. द डिस्प्लेसमेंट करंट कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट has the same physical effect as the conduction current, मतलब दोनों का इफेक्ट सेम ही होगा. फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल we can consider an example. Steady electric current in the conduction wire and the displacement current may be zero since the electric field E does not change with the time. मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा may be zero. Displacement current may be zero since the electric field E does not change with the time. इसका चेंज नहीं होता. Does not change with the time. ओके. इन अदर केसेस अपन एग्जांपल ले सकते हैं. एक और एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल the charging capacitor above both the conduction and displacement current may be present in both regions. The charging current may be present in different region of the space. May be present in the different region of space. ओके. ये हो गया अपना एग्जाम. द डिस्प्लेसमेंट करंट है रीचिंग कॉन्सिक्वेंस होते हैं. जैसे वन थिंग हमें एक नोटिस की जाएगी कि वन थिंग we immediately notice that is that the law of electricity and mechanism, that notice that the law of electricity and magnetism are now more symmetrically. Thank you. From here we will conclude the next lecture.